अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के मिड टर्म्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चैनल पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अटेंशन, रिकग्निशन, पॉइंटिंग डिवाइसेस, नॉर्मन्स इंटरेक्शन प्रिंसिपल्स, यूज़र सेंटर्ड अप्रोच, फिजिकल कंस्ट्रेंट, यूजफुलनेस ऑफ मेटाफोर, गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन मॉडल, construct persona, website interface through GUI. Command line interface, checkboxes and radio buttons, gulf of evaluation and gulf of execution. Design principles, amplification for interface design, usability and user experience, self-referential design, QWERTY keyboard, ethnographic interviews, identify patterns of use and confirm patterns of use, translated input events, semantic network. नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सप्लेन ट्रैकबॉल एज पॉइंटिंग डिवाइस. Scroll bar uses the principle for effective design. Describe the interface model of the scroll bar in one sentence. Difference between territory and analog colors. You are product designer. You are making plan to introduce a shampoo. Just one type of shampoo for every user. In this plan, good or not? Answer yes or no and spot your answer. It's very important question. Norman model focus on which principle of HCI, human computer interaction, different from corporate goal with respect to non-user goal. Dialog boxes are used in the WIMP. Explain it. Modeling phase of software development while selecting persona. The relationship between an interface, usability, user experience, and the interaction between humans and computers. HCI, human computer interaction specialist. If we design a system with good usability and good user experience, what will be the result? Being a researcher, what is the need of literature review in research in your point of view? If you are supposed to be a software engineer, then what you assume about the life cycle of the models? The user are blamed themselves for guilty the faults or insomnious. As a product designer, what you need to do for consulting personas? Thanks for watching this video. Allah Hafiz.